Good evening, children. Today, I'm going to start the chapter of geography, and the name of the chapter is Lifelines of National Economy. Now, as you know, children, we may use many materials, items, and services in our daily life. Some of these things are easily available near us or in our immediate surroundings, but some are not. On the other side, people involved in supplying the products to consumers are known as traders. Remember this term? People involved in supplying the products to consumers are known as traders. On the other side, these things have to be brought from other places. This movement, the movement of these things from supply to demand locations require transport. The pace of development of a country depends on the production of goods and services as well as their movement. Hence, fast development is dependent on efficient means of transport. For any kind of trade, your means of transport is very essential. Either a small scale business or a large scale business, for both the things, your means of transport should be very efficient. Now, children, let's move to the first point, that is means of transport. Now, in this chapter, the topics what we are going to study are means of transport, pipelines, waterways and seaports, airways and communication, international trade and tourism. These topics we are going to cover. Now, today I am going to start with means of transport. As you know that the earth is endowed with three important domains. The first one is land, the second one is water, and the third one is air. Means in these three areas, land, water and air. Now, if I talk about land, अगर हम लोग लैंड की बात करते हैं तो ऑन द लैंड मतलब ज़मीन के ऊपर या ज़मीन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं? रोडवेज, रेलवेज एंड pipelines. On the other side, if I talk about water, then there is inland transportation and overseas. The third point is air. First one is the domestic airways. What is domestic airways? जो सिर्फ हमारे देश के अंदर चलती हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट. Domestic airways, and the second point is international airways. Now, in that some are public undertakings and some are private airlines. Public undertaking में इंडिया से आती है एयर इंडिया और प्राइवेट में many are there. So now let's move to the main point, and the main point is means of transport. Since a long time, trade and transport moved within restricted boundaries of space and time. However, with the development in the field of science and technology, trade and transport have spread over. समय के साथ तरक्की हुई और हमारे ट्रेड तभी तरक्की कर पाया when the transportation system is strong enough. The world has become one big village and distance have become immaterial, or to be more precise, distances seem to have shrunk. देखो, जब पहले हमारे पास साधन नहीं थे, when we were not having the transportations, थोड़ा सा भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता था. लेकिन अब क्या है, ट्रांसपोर्ट के आने से जो बहुत बड़ी दूरियां थी, they have also decreased down. The distances have shrunk down. This has been made possibly by the development of a fast and efficient communication system. Thus, trade, transport, and communication complement each other. Just remember this point, three things are there: trade, transport, and communication. They both complement each other. They both are
all these three things are interdependent on each other. Today, life has become very complex. We are all dependent on each other. तो हम लोग हर इंसान किसी न किसी दूसरे पे निर्भर है. Even trade has expanded from local to international. अब जो trade भी है वो local से international हो गया है. India today is well linked to the rest of the globe. जो आज के समय हमारा भारत है वो पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है. Well linked to the rest of the globe despite its huge area, diversities and pluralities in the linguistic and socio-cultural fields. Transport and communication have enriched them, both socially and economically. Our lives have become easier and more amenities and comforts are readily available to us. देखो हर चीज़ में तरक्की हो रही है. इसका फ़ायदा क्या है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जब तरक्की हुई तो इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली, सोशली और इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हुई. अब हम लोग की जो लाइफ है वो बहुत ईजियर हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा एम्यूनिटीज़, डेली यूजेबल थिंग्स वी आर यूजिंग विच आर मेकिंग आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. Thus, I would say it is evident कि जो हमारी modern means of transport and communication are the lifelines of our nation and its economy. Trade, be it local, national or world, depends largely upon a dense and efficient network of transport and communication. The earth is endowed with three important domains. हमारे three important domains कौन से हैं? Land, water और we can say land, water and air. These are the three important domains to move, and all these three, land, water and air, can be used to move goods and services from place to place. Hence transport can be categorized. अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट को कैटेगराइज करें तो थ्री फॉर्म्स में है. लैंड पे रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, और अगर वाटर की बात हम करते हैं थ्रू द सी रूट, इनलैंड एंड ओवरसीज. एंड इफ आई टॉक अबाउट एयर, दैट इज योर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरगोज. डोमेस्टिक को इफ आई डिवाइड, दैट इज पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस. Okay, if I ask you the question, define transport. If I just ask you simply, define transport. You send me the answer, children. Send your answers fast, all of you. Define transport. Yes, Nigda, Siddhant, Anushka, Parul, Anidrut, Misty. Yes, children, the answer is right, which is being given by Priya, Anirudh and Snigdha Siddhant. The answer is right. Now let's talk about, or in other terms, if I say, transport is a system in which passengers and goods are carried from one place to another. Since the beginning of civilization, humans have been moving from place to place in search of food,
for trade, and for earning a living. Now, movement is an essential component of life. Children moving from one place to another, it means, or transportation, we can call that. And in other sense, we can use the word movement. Movement is an essential component of life. In older days, man carried his own load, but with domestication of animals and later with the development of science and technology, transport became easier, faster, and more comfortable. Now, children, I would like to tell you one thing about the ancient times. It's a fact file. In ancient times, people often covered long distances on foot. They used to cover the long distances on foot. Even today, it is not uncommon for people in rural areas to commute several kilometers every day. Several commute towards CUWMUTE means to cover the distance. Then came in bullock carts and carts, palki or palki, which was also a means of transport used by the rich and nobles for traveling purposes. The British brought in improvements in horse carriages, cycle rickshaw, cycle rickshaws and bicycles also became popular in India during colonial period, and these are still used in some parts of rural area. अभी भी पालकी या हम लोग कह सकते हैं the bullock carts or carts are today also used in the rural India. The advent of the British also saw trains being introduced. देखो ब्रिटिशर्स ने ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया था अपने प्रॉफिट के लिए. What we call that as मालगाड़ी. That they have introduced for their own benefits. But in many important cities of India, the Britishers introduced it. But later on, those things only were very beneficial for India. Now, I'm telling you, today life has become very complex. We are all dependent on each other. Even trade has expanded from local to international levels. All these things are there. Thus, it is evident that modern means of transport and communication are very beneficial for the whole nation. Now, let's talk about roadways. Now, the main topic is roadways. Now, what is roadways? सबसे पहले roadways होता क्या है? Let's talk about that. India today has one of the largest road networks in the world. पूरे विश्व में लगभग सबसे अधिक रोड नेटवर्क भारत के पास है. The importance of roads had been recognized in India since the ancient times. Kings such as Ashoka and Chandragupta, they built roads for easy transportation of goods and people. Construction of roads was an important activity during the Mughal period. Nowadays, you would have heard the name of GT Road or Grand Trunk Road. It was built by Sher Shah Suri across the Indo-Gangetic Plain from Kolkata in the east to Peshawar, now in Pakistan in the west. सोचो कोलकाता से ट्रेन चली थी, पेशावर तक पहुंचती थी, पाकिस्तान तक, and it was being made by Sher Shah Suri. Roads were developed from early cart tracks, which are still found in many parts of the world. Today, India's road network aggregates to about 54.7 lakh kilometer. Remember the distance? 54.7 lakh kilometer. These roads can be grouped into 6 main types. अच्छा, इन सड़कों को जो भी ग्रुप्स हैं इनको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट golden quadrilateral super highways. My word is golden quadrilateral super highways. Okay, one child has asked me the question, sir, why GT roads are present in many cities?
जीटी रोड जो है वो कई सारे शहरों में इसलिए है क्योंकि जो रोड्स होती थी वो एक राज्य से या एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करती थी. The main purpose was the connection between the different states or between the different districts. आज के टाइम आप nowadays you would have heard about दिल्ली जो हम लोग के हाईवेज बन रहे हैं, आगरा एक्सप्रेस वे, ये जितनी चीज़ें बन रही हैं, what is the purpose? The purpose is that they are combining, they are joining two districts or two states. Okay, now let's talk about roadways. My point is Golden Quadrilateral Superhighways. This road development project by the government of India links Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi together. So जो कितने एरियाज को कवर कर रहा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली. 5 areas को it is connecting. 5 areas it is able to connect. This link is the 6-lane super highway. ये जो लिंक है it is known as the 6-lane super highway. अच्छा, this project is managed by the National Highway Authority. जो हाईवेज बनते हैं, जो रोड्स वगैरह जो स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं, that is being made by NHAI, National Highway Authority of India. This interconnects many major cities and ports. देखो जो आपकी मेजर सिटीज मतलब जो इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं, this interconnects many major cities and ports and helps in industrial growth in all small towns along it. This also provides vast opportunities for transport of agricultural produce from the hinterland to major cities and ports for export. तो इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो कोई पोर्ट है या कोई एरिया है, वहाँ का सामान, गांव का एरिया, कहीं का भी सामान वो वहाँ से निकल के दूसरे शहरों तक पहुँच सकता है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका बढ़ता है तो कई शहरों में वो चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती हैं. एंड द अदर बेनिफिट इज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन. सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब ये बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, तो कई सारे लोगों को, हजारों लोगों को, द पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट. इन एडिशन इट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड फॉर सीमेंट. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जब सड़क बनेगी तो सीमेंट हमें ज़्यादा चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. और जो सुपर हाईवेज होते हैं, दीज सुपर हाईवेज reduce the time and distance between the mega cities of India. तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मेगा सिटीज का? तो ये हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समय जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अमौसी एयरपोर्ट से आपको जाना है और आपको गोमती नगर जाना है. द बेस्ट वे इज शहीद पथ. वाई? बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम एंड यू कैन मूव ऑन ए हाई स्पीड. That is the benefit. Okay, so again I would say these super highways reduce the time and distance between the mega cities of India. The north-south corridor linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu, and the east-west corridor linking Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are integral parts of this project. Now this point is clear? Any doubt to anyone? There's still any doubt, you are free to ask. Okay, now let's move to national highways. अब हम चलते हैं नेशनल हाईवेज पे. These highways connect one state with another. जो ये हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवे, वो एक स्टेट को दूसरे से जोड़ते हैं एंड आर ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. और जो ये चीज़ें होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं.
These highways link extreme parts of the country. ये जो highways होते हैं, जो extreme parts होते हैं, उन सबको जोड़ देती है. It connects all these. These roads connect long distances and some even pass through congested cities. They, at some places, have bridges and culverts which are very narrow. These road systems are also known as primary road system. इस road system को we also know it by the name of primary road system. And systems are laid and maintained by the CPWD. Remember this word? CPWD. CPWD stands for Central Public Works Department. A majority of these national highways run in the north-south and east-west directions. National Highway number 1 is the historical Sher Shah Suri Marg between Delhi and Amritsar. अगर मैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करूं तो इसका रूट क्या है? It is having Delhi, Ambala, Jalandhar, Amritsar, Indo-Pak border links Delhi with Amritsar. दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है हमारा. That is highway number 1. अच्छा, after this if I talk about 1A, national highway number 1A. So it combines Jalandhar, Madhopur, Jammu, बनिहल, श्रीनगर, बारामूला, उरी. ये सारे एरियाज है. बारामूला, उरी, श्रीनगर, ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. देन कम्स योर 1B, हाईवे नंबर 1B. इसमें आती है हमारी एरियाज बटोटे, डोडा, किश्तवाड़, सिमथन, पास, खनबल. ये सारे एरियाज है. सो लाइक दिस सो मेनी हाईवेज आर देयर. द मेन वंस आर 1, 1A, 1B, 1C एंड 2, 2A, 3. 3 जो है वो आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, थाने, मुंबई को कंबाइन करती है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ हाईवेज आर देयर. तो ये जो था द वन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट is the sum of the national highways. I have told you the route of them. Now let's talk about the other one, that is state highways. These highways, state highways क्या होते हैं? These highways join state capitals with towns and the district headquarters and provide the link with the national highways. ये जो हमारे स्टेट के अंदर होते हैं ये हमें जोड़ते हैं नेशनल हाईवेज से. These are constructed and maintained by the State Public Works Department. याद रखना, one word is there, PWD. I'm just speaking the abbreviation. Public Works Department. जब ये स्टेट के अंदर, when this Public Work Department works under the state, it is known as SPWD, State Public Works Department. And when it is working on the concept of national highways, it is known as CPWD. CPWD means Central Public Works Department. तो दोनों में फर्क रहता है. जो स्टेट हाईवेज है they are being constructed, they are being made by the State Public Works Department, और जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं they are being made by the CPWD, Central Public Works Department. Okay, these are ये जो हम लोग के जो स्टेट हाईवेज होते हैं they are constructed and maintained by the State Public Works Department in the state or the union territories as the case may be. हो सकता है यूनियन टेरिटरीज हो तो वहां पर भी PWD, State Public Works Department, it performs the duty. Now children, my next point is district roads. मेरा अगला पॉइंट है district roads. ये क्या चीज होती है? देखो, these roads connect the district headquarters with other places. जो district roads होते, देखो अभी हमने नेशनल की बात कर ली, we have talked about the state, and now let's talk about the district.
So district roads में these roads connect the district headquarters with other places of the district and act as a link between district roads and state roads. These are maintained by the Jila Parishad. Jila Parishad means your district administration. All these things are maintained by them. Now children, let's talk about the other point. Other roads. देखो हमने सेंट्रल की बात कर ली. We have talked about the national highways. हमने बात कर ली अपने district roads की, state highways की. Now let's go to other roads. इसके अलावा भी गाँव में कई जगहों पे सड़कें बनी होती हैं जो rural areas को connect करती हैं. So let's talk about the other roads. Village rural roads connect rural areas and villages with towns are classified under this category. Under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, remember the name? Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Special provisions have been made so that every village in the country is linked to a major town by a motorable road which can be used in all seasons. ये जो roads होती हैं, these roads can be used for the whole season. चाहे कोई भी season हो, उसमें roads का हम use कर सकते हैं. Now let's move to the other question. My next point is border roads. Next point is border roads. You all know the meaning of the word border. सभी को पता है border क्या होता है, जो हमारे किनारे होते हैं, जो सरहदें होती हैं. So I'm talking about border roads. These can be found along the border areas of our country. These roads are constructed and maintained by the BRO, Border Roads Organization, which functions directly under the central government. जो भी हमारे border roads होते हैं, जो border areas में हमारे constructions होते हैं, that are all being constructed by the central government. ये हमारी जो central government होती है, जो parliament होती है, उनके पास ये powers होती है. The BRO was established in the year 1960. Short questions के लिए याद रखना. BRO was established in 1960 for the development of the roads in the northern and the northeastern border areas. These roads are of strategic importance. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. It is due to those roads that accessibility in areas of difficult terrain has become possible. The roads have also contributed to the economic development of these areas. ये हम लोग का पॉइंट था. लेकिन अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, अब हमने रोड्स की बात कर ली, हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट 6 काइंड ऑफ रोड्स. हम लोग की जो 6 काइंड ऑफ रोड्स थी, पहला था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकंड पॉइंट वाज नेशनल हाईवेज, थर्ड पॉइंट इज स्टेट हाईवेज, फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स, fifth point other roads, and the sixth point is border areas. After this children, let's move to roads. See, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तभी पॉसिबल है when you are having the roads. अगर आपके पास roads अच्छी क्वालिटी की हैं, then only all these activities can prevail. See, if I talk about another classification of roads is done on the basis of the type of materials used for construction. Like, देखो roads कितने टाइप की होती है? There are two types of roads. One is the metalled and the other one is the unmetalled road. सबसे पहले let's talk about metalled. Metalled are made of cement, concrete, or even bitumen of coal. These are ऑल वेदर रोड्स. ये जो सड़कें होती है हम लोग की मेटल रोड्स होती है, ये पूरे साल भर के लिए होते हैं, ठंडी बारिश कुछ भी हो जाए, गर्मी, सब में काम करती हैं.
और जो दूसरी टाइप होती है दैट इज द अनमेटल्ड. नाउ दीज रोड्स कैन नॉट बी यूज्ड. ये जो सड़कें होती हैं इसका हम लोग बारिश में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ज़्यादा बारिश हुई है तो आप सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. एंड सो दैट्स वाई दिस रोड्स आर नोन बाय द नेम ऑफ कच्चा रोड्स. इन सड़कों को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कच्ची सड़कें और कच्चा रोड्स. चिल्ड्रन लेट्स टॉक अबाउट, ये हमने सड़कों के बारे में बात करी. दो टाइप की सड़कें होती है, वन इज द मेटल, वन इज द अनमेटल्ड. मेटल कैन बी यूज्ड फॉर थ्रू आउट द ईयर, whereas unmetal can be used except the rainy season, we can use in the other seasons. Now let's talk about what is the importance of road transport. अभी रोड ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? मैक्सिमम हम लोग को सड़कें ही दिखती हैं. अगर आप अपनी नज़रें घुमाएं, कहीं पर भी जाते तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो यू सी ओनली द रोड्स, चाहे वो ब्रॉड रोड्स हो चाहे नैरो रोड्स हो, वॉट एवर, ओनली रोड्स वी आर एबल टू सी. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और आई विल से व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट गेनिंग इंपॉर्टेंस vis-a-vis that is रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्यों ज़्यादा है? अच्छा, इस बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल रीजंस. हम लोग 3-4 पॉइंट्स की बात करते हैं. चिल्ड्रन, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स. दे आर यूज्ड एज फीडर्स टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आपको हवाई जहाज पे बैठना है, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो भी आप सड़क का ही इस्तेमाल करेंगे. मतलब तो भी आप लोग रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करेंगे. इधर योर ओन व्हीकल, इधर द ई रिक्शा और द ऑटो और कार, एनी काइंड ऑफ थिंग, और बस आप पहले रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, तभी आप दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक पहुंच पाएंगे. सेकेंड पॉइंट, रोड्स can traverse regions of dissected and undulating relief and negotiate steep slopes. देखो, आपने बस देखी होगी, बस कहीं पर भी चली जाती है, सड़कें कहीं पर भी जाती हैं. पहले अगर आपको वैष्णो देवी का याद हो या किसी भी हिली एरिया का, पहले जो बसेस होती थी वो काफ़ी मतलब इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और उसमें सबसे बड़ा क्या खतरा रहता, एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज होते थे. जैसे ऊंचाई पे जाना है आपको तो उस समय एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते थे. स्टीप स्लोप्स होती थी, सड़कें बहुत मतलब उसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा होते थे. बट ओनली पहले भी सिर्फ हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन काम करता था, और हर जगह पे आप ट्रेन और हवाई जहाज को नहीं ले जा सकते. हेंस सच अ सिस्टम कैन कनेक्ट माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Next point is roads can be constructed at a much lower cost. सबसे important point है ये, road can be constructed at a much lower cost than railways. भाई रेलवे बनाने में बहुत खर्चा आता है और काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन वही अगर हमें रोड बनानी है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा. They are cheap and easy both in construction and maintenance. आपने अक्सर देखा होगा सड़क बनती है फिर ख़राब भी होती है, उस पर फटाफट पैच वर्क हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है. रात भर में रोड बनती है, कुछ फिर खराबी आती है, गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे को फटाफट भर दिया जाता है. मीन्स इट इज़ टू ईजी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज दे डायरेक्टली कनेक्ट फील्ड्स विद मार्केट्स, फैक्ट्रीज विद फार्म्स एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. Thus the cost of loading and unloading is lesser. जो सामान चढ़ाने का, सामान उतारने का जो खर्चा आएगा वो बहुत कम कर देती है हम लोग की बस वाली सुविधा या रोड ट्रांसपोर्टेशन. If a short or medium distance has to be covered, roads are the ideal means of transport. They are best for transporting few passengers and a smaller amount of goods over short distance. Now, let's talk about the problems which are faced by road transportation. देखो फायदे तो बहुत है road transportation में. There are enough merits. There's importance of road transport, but there are certain loopholes also.
तीन चार पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं. These are the problems which the road transport is suffering or facing at the moment. Inadequate road networks to meet the needs of the people. सड़कें जो हैं वो अभी तक हर जगह तक नहीं पहुंच पाई. अभी भी कई जगहों पे सिर्फ हमें कच्ची सड़क मिलती है. National highways which were built long ago are not as wide. जो हम लोग के नेशनल हाईवे हैं जो बहुत पहले बने थे, उस समय जनसंख्या कम थी, सड़क की जो चौड़ाई थी वो काफ़ी कम थी. अब वो सड़कें नेशनल हाईवे पतले होने लगे हैं. लगता है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, सड़क छोटी लगने लगी है. इट लीड्स टू कंजेशन. अब उससे क्या प्रॉब्लम आती है? कंजेशन. मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर लो एंड ओल्ड. हमारे जो मैक्सिमम जो हाईवेज हैं या जो ब्रिजेस हैं वो पुराने हो चुके हैं. ऑलमोस्ट हाफ द रोड्स आर अनमेटल्ड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी आधी से अधिक सड़कें हैं भारत में वो अनमेटल्ड रोड्स हैं. एंड हेंस देयर यूसेज ड्यूरिंग द मॉनसून इज लिमिटेड. सो दिक्कत ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाए तो हम उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लखनऊ शहर में ही देखें, अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो आप अपने घरों के आगे चल नहीं सकेंगे, पानी भर जाता है. तो दैट इज द वन प्रॉब्लम. नाउ many of these roads pass through congested cities which creates a problem. जैसे कहीं सड़क है, लखनऊ से मान लो कोई सड़क इलाहाबाद जा रही है, तो बीच में दो चार जगह ऐसी पड़ती हैं जो किसी शहर के अंदर से सड़कें हैं. उन सड़कों पे इतना जाम लग जाता है, वहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि it takes a long duration of time to cross that particular area. Next point is there is lack of roadside amenities which make road travel cumbersome. अच्छा, सड़क के किनारे इतने ज़्यादा ठेले लगे हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, व्हीकल्स पार्क रहते हैं कि इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट कि सड़कों का जो ट्रैफिक है इट ऑटोमेटिकली गेट्स स्टॉप्ड. ये ऑटोमेटिकली ये जो सड़कें होती हैं वो धीरे हो जाती हैं क्योंकि अगल बगल सड़कों के इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि हम लोग की सड़कें जो हैं दे आर नॉट 100% सक्सेसफुल. चिल्ड्रन, आई होप सो roadways is clear to all. Yes children, respond it fast. Is roadways clear to all? Now children, let's move to the other point. My other point is multiple choice questions. Now let's move to MCQ. अगर हम लोग MCQ की बात करते हैं, the question would be soon visible on your screen. Till the time I am speaking the question is there. The golden quadrilateral super highways connect Delhi, Silchar, Madurai and Gandhinagar, Srinagar, Kanyakumari, Bhopal and Allahabad. The next one is Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Option D is Kashmir, Kanyakumari. What is the right answer? Okay, good. It's the right answer. Okay children, so the correct answer is your option C, that is Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Now let's move to the other question. Lifelines of national economy. From this chapter my 21st question is the highway projects in India are being implemented by which organization? That is GAIL, NTPC, NHAI or
D, D, B. What's the answer, children? Tell me the answer fast. Okay, that's the right answer. Good. The answer is right. The correct answer for this question is NHAI, that is National Highway Authority of India. And this NHAI is under the central government. Now, the next question is, what is the historical Sher Shah Suri Marg now called? What is the historical Sher Shah Suri Marg now called? Tell me the answer. Good, Pratyush Shukla, your answer is very fast. Good. Yes, children, your answer is correct. Now, let's move to the other question. The answer is National Highway 1. So the other question is, it will be visible, which of the following national highways covers most of the Rajasthan? Which of the following national highways covers most of Rajasthan? NH2, NH34, NH23 and NH15. Okay. Okay, children. The correct answer is option D. That is National Highway 15. Okay, children, let's come to the next question. My next question is, roads linking a state capital with the different district headquarters are known as national highways, district roads, state highways, and option D, other roads. This is the last question for today, children. Tell me the answer. Yes, children, the correct answer for this question is state highways. Okay, state highways is the correct answer. So, see the last one more question for you. Question is, which organization constructs and maintains roads in the border areas? Which organization constructs and maintains road in the border areas? NHAI, BRO, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana and BSF. Okay, children. So the correct answer for this question is BRO. That's the end of the class today.